Hey guys, welcome to the CSS tutorial. In this lecture, we will be discussing grouping selector, child selector and descendant selector. In the previous selector, हमने देखा कि selector क्या होता है और we had seen class selector, ID selector and elemental selector as well as universal selector. Okay, so let's start with grouping selector. This selector is used to group the list of item and will apply the style for that. So let's check in Visual Studio Code. First, say. mm, this example is perfect. Okay, so here is what one inside this body section I have one h1 html element, h2 html element, h3 html element, paragraph and paragraph. Okay, so I am inserting what I am grouping h2, h3 and the paragraph. Okay, and applying one property color dark green. Okay, so now I will be saving this. So I had applied property for h2, h3 as well as paragraph. So I had grouped what h2, h3 and paragraph. So मैंने h2, h3 और paragraph को group कर दिया, whereas h1 को मैंने left कर दिया है. h1 पे मैं कोई property नहीं लगा रहा हूँ. So now I will be copying path and let's say open this and paste it here. See, H1 में कोई चेंजेस नहीं आए, मगर H2, H3 और दोनों पैराग्राफ में क्या के कलर क्या हुए, चेंज हुए. तो दिस इज व्हाट पैराग्राफ, सॉरी दिस इज व्हाट ग्रुपिंग सेलेक्टर. ग्रुपिंग सेलेक्टर क्या करता है, ग्रुप करता है HTML एलिमेंट को. अगर आपको बहुत सारे वेरियस टैग HTML एलिमेंट्स में सेम प्रॉपर्टी यूज करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ग्रुपिंग सेलेक्टर को ग्रुप HTML एलिमेंट को ग्रुप कर देना है और उसके अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट जो भी आपको स्टाइल लगाना है, कलर, फॉन्ट, पैडिंग, वो हम देखेंगे CSS प्रॉपर्टी में कौन कौन सा स्टाइल होता है. फाइन, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेलेक्टर and that is child selector. Okay, so what is child selector? First I will be discussing one example of child selector. Child.html is the boilerplate. Now inserting the boilerplate for child selector. First, let me clear this that I am taking one separate example for child selector. Fine, so inside this body section I am inserting one ul tag. That is, first insert one h1, sorry, this what is given h1, insert h1 tag. Welcome to my page is what I had given h1. And now inserting one ul tag. Inside this ul is what, ul मैंने आपको html में बताया था, ul stands for unordered list. उसके बाद मैं आपको unordered list के अंदर एक लिस्ट बना रहा हूँ. उसके बाद सॉरी what is happening, ahref. Okay, I am inserting hash stand for no data. No, इस पे कुछ क्लिक करोगे तो कुछ खुलेगा नहीं, no data. Okay, so this is what name is what I want to give. Now let's insert one more. Fine, let's start 3 name. Let's say name, contact number is what I want to give, and the last one is what, let's say courses. Okay, so I want to insert inside this courses, I want to insert the various courses. Inside this ul I want to insert one order list and list as same. तो बेसिकली इसको लिखने की जरूरत नहीं, मैंने वहां से कॉपी किया था, उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ. ये हैश हो गया और इसके अंदर मैं कोर्स का नाम दे रहा हूँ HTML. फाइन इज द कोर्स आई वांट टू नेम. एंड सेकेंड इज व्हाट, let's say CSS is the course I want to give, and let's say JavaScript. Okay, now there is one h1 tag, an order list tag, and inside this order list tag there is one order list tag. Okay, so inside this heading text section I am inserting one style tag. So this is internal CSS. Okay, so style tag I am applying ul li. So what this mean, ul li? So ul, let's say ul, so ul is what, inside this ul I am having what, list item. So inside this ul I am applying what, list item, and I am applying property for
list item as well as ul. Okay, so ul list, so I am applying what, something, list style type. List style type is, don't want to give disk, I want to give square, is what I want to give. Fine. So this is the first property. Now I want to give another list. Inside this another list there is list, and inside this list there is what, ordered list. So there is what, ordered list, and I am applying one property, that is list style type, list style type none, I want to give none. Now I will be saving this, copy path, and let's say paste it here. See, देर आई हैव गिवन स्क्वायर, स्क्वायर मैंने किस किस पे दिया है, देखो स्क्वायर मैंने दिया है अनऑर्डर लिस्ट के अंदर, जो अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जो लिस्ट आइटम है उसके अंदर मैंने क्या दिया, स्क्वायर। और कोर्सेज के अंदर जो लिस्ट आइटम के अंदर, जो लिस्ट आइटम के अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जो एक ऑर्डर लिस्ट है जिसके अंदर मैंने कोर्सेज के अंदर 3 कोर्सेज दिए हैं, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, इसके लिए मैंने कोई लिस्ट स्टाइल टैब नहीं दिया, तो इट इज सेम एज व्हाट, it is same as 1 2 3, it is same, this is what, order list. ओके, सो मैंने बस फॉन्ट अप्लाई किसके लिए किया है, लिस्ट स्टाइल टाइप किसके लिए अप्लाई किया है, इसके लिए, इन तीनों के लिए। तो ये स्क्वायर मैंने अप्लाई किया, तो ये स्क्वायर, और इन तीनों के लिए मैंने कुछ अप्लाई नहीं किया, तो ये नन। ओके, सो दिस इज चाइल्ड सेलेक्टर। चाइल्ड सेलेक्टर में क्या करते हैं हम, चाइल्ड सेलेक्टर में हम क्या करते हैं, अ चाइल्ड सेलेक्टर इज यूज्ड टू सेलेक्ट दोज एलिमेंट दैट आर डायरेक्ट चाइल्ड। सो हम क्या करते हैं, एलिमेंट के अंदर दूसरे जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम चाइल्ड सेलेक्टर की मदद से सेलेक्ट कर सकते हैं, और किसके मदद से सेलेक्ट करते हैं, ग्रेटर देन के। The last selector is descendant selector. These selector are used when we want to select an element which is dependent to another element. So what this mean, let's insert one more file, that is descendant.html is the file I want to give, inserting boilerplate for it. Inside this body section I am inserting one h1 tag. Okay, and I am inserting same welcome to my page. Fine. Inside this page, so I want to highlight this page, em is what I want to give. We will be seeing what is em later on. Em, fine. So inside this page, welcome to my page, so page I have inserted in what, em. So I want to insert one unordered list. Inside this unordered list I am creating one class. Class is what I want to give as menu, is what I want to give. Fine. And inside this unordered list I want to create one list item. I had copied it, so I am pasting it here. Okay, sorry. So inside this unordered list I want to create what, one list item, descendant.html. so I will be pasting it here. See, I want to give inside this list item I want to give one tag, that is menu home. Okay, is what I want to give, and about us space content something called about us, and contact us, and about us. Okay, so I had created one unordered list. Inside this unordered list I have created one list, and home, about us, and contact us. Okay, so I had created this in whole in class of menu type. Okay, so inside this heading section I am creating one internal CSS. Fine. I am applying h1 em, so I am applying inside h1 tag में जो em प्रेजेंट है, h1 टैग में जो em प्रेजेंट है, em के अंदर क्या प्रेजेंट है, ये पेज लिखा है ना, तो इसके अंदर मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ. फाइन, सो चेंज दिस कलर एज व्हाट, वांट टू चेंज द कलर, चेंज इट, लेट्स से चेंज द कलर एज डार्क ग्रीन. ओके,
नाउ इसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, यूएल डॉट मेन्यू. सो आई एम यूएल डॉट मेन्यू. अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जो मेन्यू है उसका मैं पैडिंग चेंज करना चाहता हूँ. पैडिंग I want to give it what 2 pixel is what I want to give padding. Fine. And list style is what I want to give. List style, let's say give none. No need to give list style, so let's give it none. Now inside this unordered list menu, I have what, list. List is present or not? Inside this unordered list menu, here is what, list. So I want to change some display. Let's say display it is as inline. So these are what HTML property. We'll be seeing this in next video. I think inline is what I want to give. Fine. And there is one a, so ul dot menu, okay, list and a is there. Fine. I want to give this as margin as 10 pixel is margin I want to give. And one more text decoration is there. Text decoration I want to give as dark magenta. Okay, so now I will be copying this. Now save this. You will be seeing what you will observe is here, welcome to my page. So page is what, in dark green color. Why this happened? Because I had created one em tag. Inside this em tag I had written one page. So I had specified what, child selector, sorry, descendant selector for this em tag. Now there is one home, about us and contact us. Okay, so these are what, descendant selector. These are what, descendant. I had given margin, so margin is applicable here. Okay, so these are what, descendant selector. Descendant selectors are used when we want to select an element which is dependent on another element. So what this means, like this ul tag, this li tag is dependent on ul tag, which is dependent on class menu. Okay, this ahref tag home is dependent on list tag, which is dependent on ul tag. Okay, so this was all about the css selector. In next video we will be seeing the properties of css, like css property. like यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि कलर कैसे यूज होता है, बैकग्राउंड कलर मैं चेंज कर दे रहा था. उसके बाद css की प्रॉपर्टी हम देखेंगे कि css में प्रॉपर्टी कैसी कैसी होती है. ओके, सो आपको css की प्रॉपर्टी लगानी आ जाएगी. जैसे आप पैडिंग नहीं समझ पा रहे होगे, स्टाइल नहीं समझ पा रहे हो क्या हो रहा है, मार्जिन समझ नहीं पा रहे होगे, तो ये आप नेक्स्ट वीडियोस के बाद समझ में आ जाएगा कि टेक्स्ट डेकोरेशन क्या होता है, मार्जिन क्या होता है. सो till then thank you and have a very nice day.